Assalamu alaikum everyone. This is Mawar Sayed and you're watching Dialogue with Emerge. This is the first time we have started this new interview series, which is called Dialogue with Emerge, and we will be inviting people from different walks of life who will be sharing information, anything new that they're doing, or anything which will contribute something in our lives from different walks of life. So today, since it was the first program, और emerge का जो objective है वो यही है कि knowledge का फरोग और knowledge और skill development in people. Not only that, हम ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम आगे लेकर आएं जो कि कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी capacity में. So we have invited Dr. Saud Taj. Dr. Saud Taj is an educationist. He is an entrepreneur and also he is a business consultant. And he is a youngest pro vice chancellor of any university in Pakistan, that is Baluchistan University. And he's the youngest pro vice chancellor of that university. So please welcome Dr. Saud Taj. और हम उनसे जानेंगे उनकी journey और वो अब क्या कर रहे हैं. So I'm adding him to stream. Let's welcome Dr. Saud Taj. Assalamu alaikum, Dr. Taj. How are you? Wa alaikum salam. I'm good. Thank you. Thanks for having me in the show. Okay. Something which I really I found very interesting when I came to know about you is कि आप बाहर पढ़ के बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे and then you decided to move to Pakistan. पहले तो tell us a little bit about your background, कि आपने क्या किया है, educational आपका background क्या है, और इसके अलावा why did you decided to come back to Pakistan and serve this country? Right. Mavish, first of all, I belong to quite a city in Baluchistan, and I've spent my entire life in Baluchistan up until the age of 24, which is when I left for higher education. And then it took me about 12 more years to come back home. I did my master's and PhD from the University of Glasgow, and after that, I started teaching in the UK. I taught in about 2 universities across the UK in Glasgow and London before moving on to Canada to take up 2 more opportunities as an academician in 2 universities across Canada. And after, while I was in Canada and doing all my academic work, I got an opportunity of coming back to Pakistan and take my position as the Pro Vice Chancellor of the University of Baluchistan. And the journey was almost 12 or a little bit more than 12 years for me to come back to Pakistan. So this is what had happened. And in the meantime, I started my own business as well, which was an on-demand delivery company. And I also founded a consulting firm called the Canadian Academy of Management, which basically deals with research and development and consultation of businesses. So this is kind of my background, and you've asked a very interesting question of why did I decided to come back to Pakistan. I think the answer is pretty simple. I think every Pakistani who lives abroad somehow in his heart has home, a love for home, और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ contribute करे. Either वो बाहर रह के करे या पाकिस्तान आके करे, it doesn't make a difference. लेकिन every Pakistani that I've met in outside Pakistan wants to do something for the country. So I'm not a very different case or a unique case in that matter. So I think that was the motivation of doing something for the country, or specifically in my case, because I come from Baluchistan. It's a very backward province, बहुत गरीब सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है in terms of area, लेकिन सबसे गरीब और सबसे education और health में पीछे है. So I thought कि मेरे ऊपर double जिम्मेदारी बनती है to go back home and do something for my people. If Allah has given me an opportunity और उन्होंने मुझे उस गरीब सूबे से उठा के मौका दिया कि मैं दुनिया में जाके अच्छी पढ़ाई करूं और अपनी अच्छी एजुकेशन लूं और वहाँ पे अच्छी जॉब्स करूं, तो I have to repay my country and my people. So I came back for the development of my own people, to help them in whatever way I can. Since I'm an academic, so I wanted to help them academically. So this was the motivation of coming back to Pakistan. Yes, so इसीलिए मैं फिर वापस आया. Okay, great. Acha, since you have taught in different universities abroad, and now you are associated with this university in Balochistan, तो आप मुझे बताएं कि of course ये question भी बनता नहीं है, लेकिन ये बहुत systems are quite different. तो आपने education system in
बलूचिस्तान, उसको अगर आप कंपेयर करें फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने उसको कितना डिफरेंट पाया, और व्हाट डू यू थिंक कि कौन से वो प्रॉब्लम एरियाज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हाट आर यू डूइंग सिंस यू आर ऑन दिस सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन? माविश, सबसे पहले तो विल हैव टू रियलाइज कि ये दो मुख्तलिफ दुनिया है. दुनिया गोल है ये कहते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट. व्हेन यू गो अब्रॉड, आपको लगता है किसी टाइम मशीन में आप बैठ के कोई 200-400 साल आगे आ गए हैं. व्हेन यू कम बैक टू पाकिस्तान, आपको लगता है उसी टाइम मशीन कैप्सूल में वापस आ बैठ के गए। आप 100 पीछे आ गए हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज व्हेन यू गो अब्रॉड इट टेक्स यू अबाउट गुड 2 to 3 years टू गेट यूज्ड टू द न्यू सिस्टम. सबसे पहले कल्चरल शॉक भी होता है और सिस्टम शॉक भी होता है कि आप कहते हैं इंसान ऐसे क्यों चल रहे हैं, वहाँ तो वैसे चलते थे, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही, वो चीज़ तो वैसे होनी चाहिए थी. सो आई वाज नो डिफरेंट बीइंग अ स्टूडेंट. मैं जब गया पढ़ने के लिए तो पहले साल आई वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल बिकॉज आई डिडंट नो यहाँ पे ग्रेड्स अच्छे मिल रहे थे, वहाँ पे ग्रेड्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो यू नो देयर वाज समथिंग मिसिंग. सो आई वाज that was a setback, huh? so the first year I was figuring out कि what's wrong in me or what's wrong in them, you know, to find out कि कहाँ पे हम मिल सकते हैं और कुछ काम हो सकता है. So I think I realized सबसे पहले तो again then I थोड़ा एनालाइज करने के बाद पता चला कि ये कुछ हमारे नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो एक मुल्क में रहने से आपके अंदर डेवलप होते हैं, और फिर जब आप किसी और एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाते हैं अपने साथ. और नई दुनिया और तरीके से चल रही थी, फिर आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स से जान छुड़ानी होती है और नए कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इम्बेड करना होता है. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट एन ईजी थिंग. I respect and salute everybody who lives abroad, especially पाकिस्तान से बाहर जाता है और सिस्टम में एडजस्ट होता है. सो इट्स क्वाइट थिंग. मैंने जो चीज़ मुख्तलिफ पाई, सबसे पहले एज अ नेशन मैंने मुख्तलिफ पाया. आई विल टॉक अबाउट द सिस्टम्स, डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स एजुकेशन वाइज, एंड देन आई विल कम ऑन टू द डिफरेंस इन द स्टूडेंट माइंडसेट. So just take it as two part of the same conversation. So सबसे पहले मैंने सिस्टम में ये पाया कि सिस्टम इंतहाई मेहनती है. It's all hard working based in abroad. People are used to working hard. They never shy away from uh, working hard. They go through the whole process. कोई शॉर्टकट्स, कोई जुगाड़ नहीं ढूंढते. वो सिंपल से whatever the process is उस पे चलते रहते हैं. And a time comes when they become successful because the system is so strong. It pushes you through it और वो आपको कामयाब करके सिस्टम से निकालता है. So that was the first thing I noticed कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी because माशरे में सब मेहनत कर रहे हैं. So there is no way out for you. You're not a special case. You're not somebody's child here. अभी आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो अभी आप अल्लाह के हवाले पूरा. So you have to keep that in mind. दूसरा मैंने जो चीज़ नोट की, again in the education system of the West, it's purely research based and knowledge based. हर चीज़ के पीछे रिसर्च की जाती है. They are after seeking knowledge, they want to have specialized skills ताकि specialized काम कर सकें. In our system, it's anything can happen. A judge can become a vice chancellor, a vice chancellor can become a judge, a policeman can become a custom collector, and a custom collector can join the army. So anything can happen. So if we specialize, कहीं पे boundaries नहीं है. So we are a nation who can do anything. So which is good, which again counts towards our positive. कि हम ऐसे मुल्क हैं, ऐसे लोग हैं कि हम बहुत talented हैं, हमारी multi-dimensional talent है और हम कुछ भी कर सकते हैं. So which is positive. वेस्ट में सिस्टम बड़ा एक सिस्टमैटिक है. इट्स प्रोसेस ओरिएंटेड. इफ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, देयर इज अ कंप्लीट चैनल, यू गो थ्रू दैट एंड देन उसके बाद आप वो डॉक्टर बनते हैं. सो पहले तो मैंने सोचा, आइडेंटिफाई किया कि इट इज द रिसर्च स्किल्स और रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट है. एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर क्लास, इन योर टीचिंग एनवायरनमेंट, as a teacher, as a professor, it has to be research based because people want to know new knowledge. Nobody's there to listen to your crap about what you've already read in a book that was published 50 years back. कि जी फिलिप कॉटलर मार्केटिंग का गुरु है, उसका बादशाह है मार्केटिंग, उसके बगैर बन चल नहीं सकती. एंड वी एंड अप टीचिंग फिलिप कॉटलर इन आवर MBAs फॉर अबाउट नेक्स्ट 30 years. सेम डेफिनेशन, सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड यू गेट द सेम प्रोडक्ट. तो वही स्टूडेंट आपको 19-20 की फर्क से बाहर नजर आएगा. वेस्ट में मैं गया तो nobody knew Philip Kotler, everybody knew some new guru. So I thought ये इतने गुरु कहाँ से आ गया? I thought there was only one marketing Philip guru, Kotler को ही Philip जानता Kotler. था. और इधर इतने गुरु आ गए जिसको मैं नहीं जानता. So I knew कि the game is different. So I better adapt myself to that. तो एक तो research and knowledge based जो focus था. And the second thing I found out, or rather the third thing is a sense of purpose. Everybody who's involved in education abroad, I'm talking about higher education in particular, they have a purpose. Nobody's in the university for without a reason. कि यार टाइम पास नहीं हो रहा था तो अब्बा ने बोला कि चलो ये डिग्री कर लें.
nothing of that sort कि मेरा रिश्ता नहीं आ They रहा तो know मेरे if they मास्टर्स are डिग्री there, हाँ, if they are there, Yeah. they know कि उसमें से ने क्या There is a करना very है. solid reason. There is a very solid reason, and the guy There has a has to be a plan. कि reason. मैं, Yeah. they have a plan कि मैं इसके बाद किधर जाऊंगा. Whereas we don't have a plan. Oh यार शादी नहीं हो रही चलो डिग्री नहीं, कर we लेते हैं also चलो. have solid reason ना, वही कि अगर अब्बा पीछे जी. लगे हैं, वही जो आपने भी कहा रिश्ता नहीं आ रहा तो जी. so we also have our own reasons. So वो purpose missing होती है. So I think that's why we don't end up Yeah, doing great in whatever we do in life. yeah. That's why we ये keep हो गया. changing our career paths too. कि Absolutely. I mean, डिग्री कोई और होती है, and then शुरू में then मैंने फिर जब एग्जांपल दी self कि realization होती है तो we change our path. होता ही है कि बाय द टाइम मैं डॉक्टर की पढ़ाई करता हूँ मुझे याद आता है कि नहीं मेरे अंकल जो है ही अर्न्स बेटर एज अ लॉयर, लेट्स बिकम अ लॉयर. Yeah, तो फिर कुछ yeah. सिफारिशें लगा के हम लॉयर बन जाते हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स इन द सिस्टम. एक और चीज जो मैंने नोट की उधर, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन द करंट टाइम पीरियड इन द रीसेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पेंडेमिक्स, और ये जो सारी चीजें चल रही हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. आई थिंक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये एक साथ चलती हैं, और उधर के लोग हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं. In whatever walks of life they are, they try to do something different. हर कोई चाहता है कि मैं यूनिक रहूं, तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करता रहता है यूनिकनेस की तरफ. whereas we are not that creative in terms, because हमें सोशल प्रेशर इतना होता है कि हम अपने से कुछ नया नहीं करना चाहते, या कर नहीं सकते, या कोई हमें इजाजत नहीं देता. So I think the focus on technology and innovation and creativity was outstanding abroad. Or I realized that I have to live with it now. It's part of life. अभी मैंने MBA बगैर टेक्नोलॉजी के कर लिया था, लेकिन I cannot do my MSc without technology. So ये difference मैंने उधर देखा. The other thing that I was really inspired by was the things like the culture of respect, humanity, compassion. If you're a student and you have an issue, and you go tell your head of department कि जी मैं 2 दिन छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त बीमार है, so they would trust you और वो आपको छुट्टी दे देंगे. They would not doubt you on that. So they have a very broad space, and they accept anything, even if it's rubbish from your side, they accept it on humanitarian and compassionate grounds. Because they themselves don't lie and they don't expect you to be lying. और हमारे यहाँ क्योंकि हम खुद झूठ बोल रहे होते हैं तो हम हर एक को डाउट करते हैं. अच्छा, since you have come back, तो एंड जो मेरा दूसरे सवाल का जो मेरा दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि व्हाट रिफॉर्म्स और व्हाट डेवलपमेंट्स अब तक आपने की हैं एवर सिंस यू हैव टेकन चार्ज. सबसे पहले तो what reforms we need across the country is, especially in Baluchistan, is focus on self development, कि लोगों के अंदर एतमाद पैदा किया जाए, कि वो खुद अपनी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाए. Because people do not take responsibility of their careers, of their marriage, of their anything. हर चीज अब्बा पे डाल देते हैं, अम्मा पे डाल देते हैं, चाचा पे डाल देते हैं. शादी होगी तो चाचा ने करा दी, अब्बा ने करा दी. जॉब गलत होगी तो मेरा कसूर नहीं, डिसीजन अपने, हाँ, डिसीजन को हम नहीं लेते हैं. ब्लेम शिफ्ट करना, हमेशा ब्लेम करते हैं. हम डेवलप भी इतने नहीं होते कि मेच्योरली चीजों को चूज कर सके, या अपने लिए उसको वी परस्यू समथिंग दैट्स रीजनेबल और दैट्स एक्सेप्टेबल बाय अस. सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट, आई वुड पुट दिस ऑल इन सेल्फ डेवलपमेंट, कि हमारे अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट है व्हिच इज मिसिंग. तो अच्छा, वो फिर कनेक्टेड है स्किल्स डेवलपमेंट के साथ, बिकॉज मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए अपने आप को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए. सो दैट इज मिसिंग. सो आई थिंक ये गैप है जिसपे वी हैव टू रियली फोकस ऑन. सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल दोनों along with the degree, क्योंकि degree for the sake of having a degree takes you nowhere. डिग्री हमने ऐसे सोच लिया है, सॉरी आई जस्ट कट यू देयर. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. डिग्री ऐसे जैसे हमने इस्लाम में नमाज को अहमियत दी हुई है कि आपने नमाज पढ़ ली और आप जन्नत चले जाएंगे, तो आपने डिग्री की तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी. सो दैट्स, और हमने क्योंकि हमारा माइंडसेट है ना, कोई कितना भी काबिल हो, हम फिर पूछते हैं तुमने किया हुआ क्या है, तुम्हारे पास डिग्री क्या है. तो ये क्वेश्चन से बचने के लिए भी सब लोग जो है वो, मतलब अगर मैं पूछूंगा आपके मुझे सर दर्द की दवाई बताएं, तो आप जब तक डॉक्टर नहीं होंगे मैं पूछूंगा नहीं. हालांकि मैं आई वोंट बिलीव एनीथिंग एल्स बट योर डिग्री, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. अच्छा, माय क्वेश्चन वाज कि हैव यू डन एनीथिंग टिल नाउ, या कुछ प्लानिंग में है कि चेंज लाना है यूनिवर्सिटी में? अच्छा, सो वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन स्किल्स. हम स्टाफ में भी ये काम करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी, कि हम किसी तरह करिकुलम में स्किल्स डेवलपमेंट को उसका हिस्सा बनाएं. हमारे रिसेंट करिकुलम में स्किल्स इज नोवेयर टू बी सीन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करें अपने बच्चों के ऊपर,
और उनको डिग्री के एज पार्ट ऑफ देयर डिग्री हम कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें जो उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, जिसमें डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, इस तरह की आप स्किल्स की बात करें. सो दैट इज, आई थिंक इट्स अ बिग जॉब. अगर मैं ये 2-3 साल में भी कर जाऊं, आई थिंक इट्स absolutely. So it's a big thing, it's not a small thing. But if that happens, it will be a big contribution. Yeah. अच्छा, एक चीज, there's a question because I know Baluchistan is quite different from Karachi. मैं सिंध की बात नहीं करूंगी, स्पेशली कराची. तो जब ये बिकॉज ऑफ कोविड और जो रिजल्ट जो उसका पेंडेमिक की वजह से जो हमने फिर लॉकडाउन किया, तो बलूचिस्तान में आपने क्या असरात देखे कोविड के, कि क्या कोविड ने इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सिस्टम पे कोई नेगेटिव उसका इफेक्ट आया? और अगर आया है तो ऑफ कोर्स मतलब किसी न किसी तरह तो अफेक्ट किया है कोविड ने हम सबको, एक इकोनॉमिकली भी, एजुकेशन सिस्टम को भी. हर कोई ऑनलाइन उस तरह नहीं कंटिन्यू कर पाया अपनी क्लासेस एंड ऑल. और दूसरा, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज अ लेसन जो हम आज सीख लें, और इस तरह के पेंडेमिक हो गए, किसी भी किस्म की ऐसी ग्लोबल सिचुएशन हो या कोई ऐसी सूरत हाल हमें दोबारा फेस करनी पड़े, तो उस वक्त हमारे हाथ पाँव ना फूल जाए और हम एकदम परेशान ना हो जाए. तो फर्स्ट टेल मी के कितना इम्पैक्ट हुआ है इस एजुकेशन पे, एंड इकोनॉमी को भी आप टच कर सकते हैं. दूसरा के व्हाट इज द लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस करंट कोविड सिचुएशन? Right, Mavish. I think without a doubt, हर जगह affect हुआ है. COVID has shattered almost everything. It has halted the entire world. So I would be looking bad in saying कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ. I think बहुत फर्क पड़ा है. हमें पिछले 8 महीने में बहुत नुकसान हुआ है as an educational institution. I'll stick towards education rather than economy because that's not my subject. So I'm kind of I'll try not going there because an economist would then question. Since you are a business consultant, who are you to speak? I can. But let's stick to answer. I'll take two perspectives. Okay, fine. So as an educationist, I think हमारी तालीम पे बड़ा फर्क पड़ा है. लोग एक तो 8 महीने में बेकारी की आदत हो गई है. हर बंदा थोड़ा रिलीजी हो गया. अच्छा, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की मैंने बात की और सेल्फ स्टडी का कोई कल्चर नहीं है. ड्रिवन भी नहीं है ना. वी स्टडी फॉर मार्क्स, वी डू नॉट स्टडी फॉर नॉलेज. हम इसलिए पढ़ने जाते हैं कि हमें कुछ नंबर मिल जाए और हम फिर उस एक फर्स्ट डिव की डिग्री को लेके हम कहीं पे नौकरी ले लें. हम अगर अपनी डेवलपमेंट के लिए तालीम हासिल करें तो मेरे ख्याल कोविड का अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं उठाया. Everybody I get in touch with has been done nothing in the last 8 months. और हर कोई घर बैठा है, कोई किसी, it's. Otherwise, we could have done a lot of online. We could have taken a lot of online courses. Yeah, a lot. बहुत I think we were lucky enough because rather I was lucky enough. I had work in Canada in a university that is purely online, so I knew what exactly needs to be done. So we got up our team together और हमने online एक system बनाया. We made up an online education policy in line with the HEC's policy. और हमने वो इम्प्लीमेंट की और आई थिंक विद इन अ मंथ एंड हाफ हमारे वी वर अप एंड रनिंग, व्हिच इज अ बिग थिंग. हमारा आपको पता है टेक्नोलॉजी बलूचिस्तान में इस टाइम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और पीपल आर नॉट ट्रेन्ड. बलूचिस्तान में टेक्नोलॉजी इज बड़ी लेट आई है और हमारे अभी यंगस्टर्स ने शुरू की यूज करना बिकॉज पिछली जनरेशंस का टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहा. तो इस वजह से बट वी वर अप एंड रनिंग. हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, हमने स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड किए. ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट रजिस्टर्ड टू आवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स. तो हमने वी वर अप एंड रनिंग इन अबाउट 2 to 3 months जब कोविड आया. सो एक तो ये था फर्क पड़ा, लेकिन वी वर नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड बिकॉज हम ट्रेन नहीं थे. हमने उल्टी पुल्टी जैसी स्लाइड्स थी चला दी, हमने कुछ ना कुछ पढ़ा दिया, लेकिन हमने चले एक कोशिश की. So I think we were not trained. It was a learning experience. पहला समझे पायलट प्रोजेक्ट हो गया. Now you know कि you can offer summer courses online. मुझे the other day I was talking to someone, तो I said कि ठीक है ये टीचर्स के लिए और एजुकेशनिस्ट के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन they learned a new skill that was IT. कि IT को यूज करके पढ़ाना किस तरह. You're quite right. It was much needed. I think हमें वो झटका लगना जरूरी था, नहीं तो हम सीखते कुछ नहीं. तो I think अल्लाह की तरफ से वहीं फिलिप कॉटलर जिस तरह पढ़ाने हमें एक अच्छा झटका लगा, उसका हमने कुछ ने फायदा उठाया, कुछ ने नहीं. लेकिन हमें एक लेसन मिल गया कि भाई this even if this pandemic is over, we can have another pandemic in a year's time or 6 months time. So we have to be prepared. So I think that realization is enough कि हम अभी खड़े हो जाए अपने पैरों पे और हम अपने को किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए इक्विप करें. So I think move towards technology is badly needed. अगर नहीं है तो we should all think about it कि हम कैसे अपने businesses को, अपनी
क्लासेस को हम या अपनी जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह का यूज़ करें कि हमारे घर में बिजली हो कि ना हो, इंटरनेट हो कि ना हो, पेंडेमिक हो कि ना हो, हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हों। So I think that's what we did as well, और I'm very proud कि हमने वो चीज़ we were able to pull it off in a good way, I'd rather say. And the lesson that we have learned from this pandemic and जो entire दुनिया ने बिल्कुल एक lesson learn किया वो है कि we first of all realization that we were not prepared, be it us or the US or any other country. There were hardly few countries who could respond. बल्कि बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका बहुत अच्छा response था, which has left everybody Shocked. everybody wondering. Yeah. जी. लेकिन it's a good thing. कभी कभी होता है ना कि बैठे बिठाए कोई आपको अगर टाइटल या तमगा मिल जाए तो खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. But what important is कि हमें अपने आप को आईटी में आगे लाने की जरूरत है क्योंकि आगे आने वाला Absolutely. दौर जो है वो Absolutely. जिसको मतलब जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है which is the last question for today. ये कि नॉलेज इकोनॉमी की इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बात की जाती है बल्कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक नॉलेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज इकोनॉमी पे की टास्क फोर्स भी बनाई गई. उसका इतना ज़्यादा इस वक्त मुझे काम नज़र नहीं आ रहा. सैडली वो तानिया हैड टू लीव द कंट्री एंड ऑल. मगर आपको क्या लगता है कि एक तो हम इस वक्त वाकई हम बहुत पीछे खड़े हैं लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मूव टुवर्ड्स आईटी एंड हम अगर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ अगर जाएं तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. और एज ए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम ज़्यादातर क्योंकि सिंस यू हैव दिस की पोजीशन जिसमें आप अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि पूरे आपके रीजन को अपलिफ्ट कर सकता है. तो आप knowledge economy का तो have say few words what you think about it and how Pakistan can move towards that direction because this is the only way out. You're absolutely right, and I'll agree with you over here. ये अच्छा एक जो हमारा issue है as a nation, I think we should accept that. Again, we look for shortcuts. और आई थिंक ये हमारी बहुत बड़ी एक कमजोरी है. आई थिंक वी आर अ वेरी डायनामिक नेशन. मैंने पहले कहा वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर आप दुनिया में देखें जितना अच्छा पाकिस्तान ने कोरोना और पेंडेमिक को डील किया है, लोगों ने मतलब पीपल आर स्टिल लाफिंग मिल रहे हैं. दे डोंट केयर कि दुनिया में मतलब एक बहादुर नेशन है. सो एक तो हमें ये पता चला in the beginning people took it little seriously लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है वो थोड़े दिन तक तो आप उस प्रॉब्लम पे रोते धोते हैं फिर आपको आदत पड़ जाती है कि यार कमर का दर्द है तो है मैं कुछ नहीं कर सकता. तो कोरोना इज सिमिलर टू दैट कमर का दर्द के समझौता कर लिया और अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल स्टार्ट कर. एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है ना. हमें पता है बिजली ना भी हो तो हमने गुजारा करना है. सैलाब आ वी आर गया. वेरी जी हाँ. रेजिलिएंट. So I think that's good. अच्छा, the lesson to learn और गवर्नमेंट के लेवल पे भी I'd like to share this opinion if anybody from the government is around या उसके बाद पहुंचती है. हम हर काम शुरू करते हैं एक अपर लेवल पे. हम ग्राउंड वर्क नहीं करते हैं. तो in order to become a knowledge economy, I think we are going towards the pace is. I think we've started walking towards that. On that journey. नॉलेज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें. नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्स जिसकी मैं पहले बात कर रहा था. जब आपके ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग होगा आप स्कूल लेवल पे इसको ले जाएं. आप यू एजुकेट पीपल एट दैट ग्रास रूट लेवल ताकि जो प्रोडक्ट सामने आएगी वो उस नॉलेज इकोनॉमी को बनाएगी और उसमें कंट्रीब्यूट करेगी. एक टास्क फोर्स बना के काम शुरू कर देना और 2 साल चलाना, फिर नई गवर्नमेंट आके उसको छोड़ देगी, फिर हम उधर ही पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट हम जो भी डिसीजन लें वो ग्राउंड से स्टार्ट करें. उसमें एजुकेशनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यू कैन नॉट विन दिस वॉर और embark on this journey successfully without education. No. So I think it's important कि हम ग्राउंड में काम करें और स्कूल लेवल से हम स्टार्ट करें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हम कदम बढ़ाएं. So I think that would be my response here. क्योंकि पता है I was reading somewhere and it was the numbers were quite mind boggling कि पूरी दुनिया में जो जैसे हमारा ज़राअत ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है और हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की थी. अभी भी है टेक्सटाइल. पूरी दुनिया में टेक्सटाइल की ज़रूरत इस वक्त 6% है और 94% दूसरी चीज़ों की डिमांड है दुनिया में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एविएशन की बहुत सारी चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है. और हम सैडली कहीं पर भी फॉल नहीं करते किसी भी कैटेगरी में बिकॉज और ये नहीं कि हमारी यूथ में पोटेंशियल नहीं है.
10 करोड़ नौजवान हैं हमारे मुल्क में, और जिस तरह आपने बात की कि एक बंदा पुलिस वाला कुछ और काम कर लेता है, फला बंदा कुछ और कर लेता है, इसका मतलब है बहुत पोटेंशियल भी बहुत है, हम बड़े डाइवर्स किस्म के लोग हैं। तो थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। यूथ हैज़ पोटेंशियल इफ यू लुक एट ऑल दीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फाइनल कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट बनाना होता है, मजबूरी है, और वो इतना अच्छा बनाते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इन्वेस्ट कर दे या उनके प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ बैकिंग दे दे, तो बहुत आगे जा सकता है ये मुल्क। Okay, thank you so much, Dr. Saud, for your precious time. It was wonderful having this dialogue with you. Same Sorry, here. time का थोड़ा constraint है. Half an hour is the half an hour के अंदर में wrap up करना होता है. But inshallah, we'll have more dialogues. और हो सकता है कि future में, because Emerge has a youth program that we are launching very soon, और उसका मकसद ही soft skills training है, and not only soft skills training, basically हमें उनको bridge the gap between the practical real life, including corporate sector, entrepreneurship and students, क्योंकि students हैं तो बहुत सारी तादाद में, यूथ तो बहुत ही, मगर उसको पॉलिश करना, उसको सिखाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उस कोई गैप को ब्रिज करने के लिए वी हैव अ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रॉब्ली विल बी नीडिंग योर हेल्प इन दैट, और मे बी योर Definitely. इनपुट। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक, सो question is ke what is the role does Dr. Saud Taj think platforms like Emerge has to play in promoting knowledge economy in Pakistan? What do you think the Right. platform like us? I think ये तो the question has the answer in itself कि इस तरह की platforms, we need platforms like Emerge. We need to start talking about knowledge economy. Number one, सबसे पहले आप सोचेंगे, बोलना शुरू करेंगे तो journey start करेंगे. The other True. important thing is awareness. I think Emerge is a great platform. वो aware कर रहा है लोगों को या अपने users को या जो उनके साथ associated है कि भाई we need to get this thing done. अच्छा, then you would go move to the next step कि how. So I think it is platforms like these जो कि would help bring everybody together, and then let us Yeah. move towards that goal of becoming a knowledge economy. So I think Emerge and any other platforms who are currently functional, I think they have a great role to play in all of this, because government, we cannot leave everything for the government to do. We have to take initiatives. I think Emerge is a great platform, and I'm sure any other platform like this would be greatly helping the country. And I feel such platforms provide a place where people can network, and it's all about networking. आपके पास जितने Absolutely. different walks of life से लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और फिर मिल के कोलैबोरेटिव एफर्ट डालें, तो और फिर गवर्नमेंट का तो थोड़ा जैसे रिपल इफेक्ट होता है, पर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी हलचल गवर्नमेंट में होती है। Thank you so much once again for being part of this show. And I hope कि बल्कि I hope नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और आप जो भी प्लान्स हैं आपके बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए, वो सारे अल्लाह ताला आपको हेल्प करे और स्ट्रेंथ दे के वो आप सारे पूरे कर सकें। Thank you so much everyone for watching this show, and Thank you, Mavish. Thank you. we'll see you again with some new guest. So stay tuned and keep doing the good work that you're doing. Everybody is doing something good in their capacity, so keep up the good work. Thank you, and Allah Hafiz.